This is TOC second model question paper, and within this question number 1A, design DFA to accept the string of A's and B's where language L equal to W mod 5 equal to W mod 4. I think this question is wrong. Maybe there is typing mistake. Question number 1A, second question. Within A, second question, design DFA to accept the string of zeros and ones language L equal to starting with 0 1 or starting with 1 0. So to design DFA to starting with 0 1 or 1 0. So to design DFA starting with 0 1 or 1 0. There are two possibilities from starting with 0 1 or 1 0. After this you can take anything, any combination of 0 and 1. What is the DFA for this? DFA for this is starting with 0 1 or 1 0. From this at least we need two transactions. From initial state we need at least two transactions. जब भी DFA और रेगुलर एक्सप्रेशंस और ग्रामर लिखना है तब बेसिक कंडीशंस क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वो देखना है. यहाँ पे इनपुट सिंबल्स क्या है? देयर आर टू इनपुट सिंबल्स 0 एंड 1 है. तो इसी स्ट्रिंग कौन सा जनरेट होता है? बेसिक स्ट्रिंग्स आइदर 0 और 1 और 1 और 0. स्टार्टिंग विथ 0 और 1 और 1 और 0. इसके बाद आफ्टर दिस यू कैन टेक एनीथिंग, any combination of 0 and 1. 0 1 or 1 0. 0 1 or 1 0. This is also final state. उसके बाद नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं? any combination of 0 or 1. any combination of 0 1, 0 1 and 0 1. This is Q0, Q1, Q2, Q3 and Q4. This is DFA except the string starting with 0 1 or 1 0. After this you can explain 5 tuples. Q summation delta Q0 and F. You can explain these 5 tuples. Question number 1B. Question number 1 is or then question number 1b. Define NFA, then convert the following NFA to equivalent DFA. Must convert this example, convert this from NFA to DFA. First define NFA. What is the definition of NFA? For a specific input symbol 0 or 1 transition from current state to next state is called as NFA. Given NFA is, this is given NFA. Given NFA is Q0, Q0, Q1 and Q2. Q0 is initial state. Q0 to Q0 0, 1 and here this is 1 0, 1. This is given NFA. Convert into DFA. First, if I want to convert from NFA to DFA or epsilon NFA to DFA, there is 4-step algorithm. First, starting state of NFA, starting state of DFA, input symbols of NFA equal to input symbols of DFA, then transaction, then identify final state. Within this first step, starting state of DFA. Starting state of DFA is starting state of NFA. Starting state कौन सा है यहाँ पे? Q0. For this you can assign A. Next, step 2, input symbols.
input symbols of DFA. Input symbols of NFAs are the input symbols of DFA. Mission equal to 0, 1. There are two input symbols. Step 3. Step 3. This is step A. Means starting state is Q0. For this Q0 we assign A. इसको हम क्या किए? A assign किए. Means A on input symbol A and 0 and 1 check करना है हमको. Consider state A on input 0 and 1. Both we have to check. Means DFA transactions delta D, A on input symbol 0 equal to delta N. NFA transactions A on input symbol 0. A on input symbol 0. What is E? A is Q0 on 0. Q0 on 0, Q0 on 0, Q0, Q0 on 0, Q0 and Q0 on 1. No, Q0 on 0 is only Q0. 0, 1 given input symbols, and this is 1, 0, 1. Q0 on 0, Q0 on 0, Q0 itself. Thus this is Q0. This is same state. Assign A. For Q0 we assign A. Next state A on one input symbol A. In input symbol 1. A on input symbol 1. A on input symbol 1 means Q0. A means Q0. Q0 on 1, Q0 on 1, Q0, Q0 on 1, Q1. Means Q0 and Q1. For this assign, this is new state. If this is new state, then assign this is new variable, that is B. Next, within this, consider state A is OR. The new state is B. Again, state B on input 0 and 1. B on 0. NFA transactions. What is B? B is Q0 and Q1 on 0. Q0. Q0 on 0. Q0. Q0. Q0 on 0. Q0. Q1 on 0. Q2. Means this is Q0. Q2. Q0. Q2 is new state. Q0, Q1, Q2 is B, and this is Q0, Q0, Q2. Means this is new state. For this assign C. This is on 0. Next, B on 1. Q0, Q1 on 1. Q0 on 1. Q0 on 1. Q1. Q0, Q0 on 1, Q0, Q0 on 1, Q1, and Q1 on 1, Q2. Means this is Q0, Q1 and Q2. This is new state. For this again assign new variable, that is D. Here state A is OR, then state B is OR. Similarly, check next state, that is C and D. Consider state C on input symbol 0 and 1. C is Q0 and Q2. C on 0. DFA transactions
delta n C. What is C? Q0, Q2 on 0, Q0 on 0, Q0 on 0, Q0, and Q2 on 0, there is no transaction, means fine. For this we can write direct, this is Q0. For Q0 means this state is repeated, A. C on 1, C on 1, Q0, Q2 on 1, Q0 on 1, Q0, Q1, and Q2 on 1, Q2 on 1, 5. Plus there is Q0 and Q1. For Q0 and Q1, we assign B. Q0 and Q1, we assign B. Means this is repeated state B. Consider state C is over. The new state is D. Similarly, we can solve for D. Consider state D on input 0 and 1. Input 0 and 1. D on 0. What is D? D is Q0, Q1, Q2. Q0, Q1 and Q2 on 0. Q0, Q1, Q2. Q0, Q1, Q2 on 0. Yeah. Q0 on 0, Q0. Q1 on 0, Q2. Q2 on 0, fine. Means this is Q0 and Q2. Q0 and Q2 assign Q0 and Q2 means this is C. D on 1. Q0, Q1, Q2 on 1. Q0, Q2 on 1. Q0 on 1, Q0. Q0 on 1, Q1. Means Q0, Q1. And Q2 on 1, 5. Q0 on 1, Q0, Q1, Q1 on 1, Q2, Q2 on 1, 5. Means here Q0, Q1 and Q2. This is D. And once this is second example here. This is Q0, Q1 and Q2. This is D. And once you know this all transactions, then you can construct transaction table. Transaction table. Once you know all transactions, then you can construct transaction table. In transaction table, before this, here total number of states A. What is A? A means Q0. What is B? B is Q0 and Q1. Then what is C? C is C equal to Q0, Q2, and D equal to Q0, Q1, Q2. Means this is initial state. And C and D final state. Final state. Then construct transaction table from this. Transaction table, input symbols 0 and 1. Total number of states A, B, C, then D. A is starting state.
A is starting state. A on 0. A on 0. A. A on 1. This is B. Next, B. B on 0. C. B on 1. D. B. B on 0. C. B on 1. D. The next state C, and C is final state. C on 0. C on 0 A. C on 1 B. This is A, B. Next state D. D on 0. D on 0 C. D on 1 D. C, then D. And once you know transaction table, you can design DFA for this. DFA for this, A is starting state. A is starting state. This is A. A to A 0. A to B 1. Then B to C. C is final state. B to C 0. B to D. D is final state. B to D 1. From C to A. C to A on 0. C to A 0. C to B 1. D to C 0. D to D 1. This is self-proof. This is DFA. This is DFA from NFA. This is final DFA from NFA. Next question. This is DFA from NFA. Next question is question number 2A. Find epsilon closure of all states, then convert from following NFA to DFA. Find epsilon closure of each state. Epsilon closure means free transactions from current state to next state. Find epsilon NFA. First epsilon NFA. This is epsilon NFA. A, B, then this is final state. This is given epsilon NFA. A, B, this epsilon, then next A, B, B, A, B, B. Total number of states Q0, this is Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, and this is total number of states up to Q10. First find epsilon closure of all states, then convert from NFA to DFA. Convert from NFA to epsilon closure means without any input symbol transaction from current state to next state. And epsilon closure of each state, first you can say write itself.
epsilon closure of Q0. Epsilon closure of Q0, first Q0 itself, Q0, then Q02, next using epsilon, Q0, Q02, Q1, Q2, Q4, then Q7, Q0, Q1, Q2, Q4, then Q7. This is epsilon closure of Q0. Next, epsilon closure of Q1, first Q1 itself, Q1, Q2, Q4, Q1, Q2, Q4. Epsilon closure of Q2, epsilon closure of Q2 is only Q2. From Q2, there is no transaction. From Q2, there is no transaction. Means epsilon closure of Q2 is only Q2. Epsilon closure of Q3, Q3, Q6, Q7, then 1, 2, 4. Q3, Q6, Q7, then Q1, Q2, Q4. For this we can write in ascending, thus Q1, Q2, Q3, Q4, Q6, Q7. Epsilon closure of Q3. Epsilon closure of Q4. Epsilon closure of Q4. From Q4 is there any transaction? No. बस यहाँ से जी एप्सिलॉन पे ट्रांजेक्शन नहीं है. Epsilon closure of Q4 is Q4. Epsilon closure of Q4 is Q4. Epsilon closure of Q5. Epsilon closure of Q5, Q5, Q6, Q7, then Q1, Q2, Q4. Direct we can write in ascending order. Q1, Q2, Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, then Q7. Epsilon closure of Q6, Q6, Q7, then 1, 2, 3. Again we can write in ascending order. Q1, Q2, Q4, Q6, then Q7. Epsilon closure of Q7. From Q7, is there any transaction using epsilon? No. Epsilon closure of Q7 is Q7. Epsilon closure of Q8. Epsilon closure of Q8 is Q8. Epsilon closure of Q9. Q9. Epsilon closure of Q10 is Q2. Epsilon closure of Q8. Q8 itself. And epsilon closure of Q9. Q9 itself. Epsilon closure of Q10 equal to epsilon closure of Q10 itself. This is called as epsilon closure of each state. Next, convert following NFA to DFA. This example also similar to NFA to DFA, but within this we have to find epsilon closure of each every time. Again we can convert this epsilon NFA into DFA. Starting state, epsilon closure of each state is 4. Then next, convert from NFA to DFA. Step 1. First step 1. Starting state of DFA. Starting state of DFA, starting state of NFA. Starting state of NFA क्या है?
here Q0 means epsilon closure of Q0. Epsilon closure of Q0, Q0, Q1, Q2, Q4, then Q7. Step 2, input symbols. Input symbols of DFA. A comma B. There are two input symbols. Next, consider state. This is state A. Consider state A on input symbol A and B. Now check all states on input symbol A and B. A and B. Delta D. Here A on input symbol A. A on input symbol A. A on input symbol A. Direct you can write, or you can write value of A Q0, Q1, Q2, Q4, Q7 on input symbol A. अब यहाँ पे Q0 नहीं है, इसके अंदर क्या है, Q0 नहीं है, ट्रांजेक्शन नहीं है, Q1 ऑन ये नहीं है, Q2 ऑन ये, यस, Q3, Q4 ऑन ये नहीं है, Q5 ऑन, Q7 ऑन A, Q7 ऑन A is 8, means epsilon closure of Q3 and Q8. Epsilon closure of Q3, Q1, Q2, Q3, Q4. Epsilon closure of Q3 is Q3, Q6, Q7, Q1, Q2, Q4. You can write in ascending order means Q1, Q2, Q3, Q4, Q6, Q7. Q4, Q6, Q7, then Q8. Q1, Q3, Q6, Q7, then Q1, Q2, Q8. And epsilon closure of Q8 is Q8. This is called as new state. Assign B. Next, A on B. A on B. Direct you can write A on B. What is A? This one. Q0 on A. Q0 on A. There is no transition. Q1 on A. No transition. This is B. Q2 on A. Q2 on B. No. Q4 on B is Q5. And Q7 on A. Is there any transition? No. That's only epsilon closure of 5. And epsilon closure of 5 is 5, 6, 7, then 1, 2, 4. You can write in ascending order Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, then Q7. For this you can assign state C. This is, if this is new state, then assign C. Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7. This is state C. Next, new state B. Consider B input A and B. Just I will fold this paper because
B. Input state B. What is B? B on A. Here B means Q1, Q2, Q3, Q4, Q6, Q7, Q8 on input symbol A. अब यहाँ पे Q1 और ये है क्या? नहीं है. B क्या? Q1 और ये नहीं है. Q2 और ये, यस Q3 और ये नहीं है. Q4 और ये नहीं है. Q6 और ये नहीं है. Q7 और ये नहीं है. राइट? Q7 और ये Q8 and Q8 on ये नहीं है. बस Q2 on ये is Q3 and Q7 on ये is Q8. बस epsilon closure of Q3 and Q8. Epsilon closure of Q3 and Q8 is, this is same state B. B on B. Epsilon closure delta of n B on B. B on B direct you can write B. Q1 on B है क्या? नहीं है. Q2 on B? No. Q3 on B? No. Q4 on B? Q5. Next Q4 on B? No. Q4 on B is Q5. Q6 on B? No. Q7 on B? No. Q8 on B? Q9. Miss Q5, Q9. Epsilon closure of Q5. Epsilon closure of Q5 already over up to Q7. And epsilon closure of Q9 is Q9 itself. Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, then Q9. Epsilon closure of Q5 plus epsilon closure of Q9. Epsilon closure of Q9 is Q9 itself. And this is new state. For this you can assign D. C is over. Next, consider state B is over. Consider state C. C on input symbol A and B. C on A. What is C? यहाँ पे C क्या है? Epsilon closure delta of n Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7 on A. C means क्या है? C on E. C on E क्या है? C में क्या है? Q1 on E. Q1 on E नहीं है. Q2 on E is Q3. Q3. Q4 on E नहीं है. Q5 on E नहीं है. Q6 on E नहीं है. Q7 on 8. Q8. And epsilon closure of Q3, Q8 is, this is B. Or state C is over, then state, consider state D. C on A is over. C on A. C on B. C on B. C on B direct you can write C. C क्या है हमारा? C. C on B. 1 on B, no transition. 2 on B, no transition. 4 on B is 5. 5 on B, no transition. 6 on B, no transition. 7 on B, no transactions. Means 6 on B is epsilon closure of 5.
and epsilon closure of 5, this one, epsilon closure of 5 is Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7. Now this is C. C on A is B, C on B is C. Next state D. A and B. On input symbol A and B. तो D क्या है हमारा पास? D क्या है? D on input symbol A equal to epsilon closure delta of n D Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q9 on A. This is D on A. D on A, 1 on A, 2 on A is 3. Q3. 4 on A, no. 5 on A, no. 6 on A, no. 7 on A, no. 8 is there, no. 9 on A, no. But this is only epsilon closure of 3. And epsilon closure of 3 is there epsilon closure of 3? Here epsilon closure of 5. Epsilon closure of 5. Oh, 7 on A. 7 on A is there. 7 on A is 8. Means epsilon closure of 3 and epsilon closure of Q3 and Q8. Epsilon Q3, Q8. This is B. Next, D on B. D on B. D on B direct we can write D. This is D. D on B. Here only 4 on B. 4 is there. 4 on B is 5. Epsilon closure of 5. The next 9 is there. 9 on B. Here 8 is there. No. 9 is there. 9 on B is 10. Epsilon closure of 5 and epsilon closure of 10. Epsilon closure of 5. Epsilon closure of 5 already we have seen here. Then this example. Which one? This is epsilon closure of 5. Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, and epsilon closure of 10 is 10. And this is new state. Assign this is E. New state E. Next E on A and B. E on A. E on A, direct we can write E. E on A, 1 on A, no transition, 2 on A is 5. 2 on A is 3. Next 4 on A, no. 5 on A, no. 6 on A, no. 7 on A, 8. Epsilon closure of 8. Next 10 on A, no. Epsilon closure of 3 and 8 is, this is B. E on B. E on B. E on B. E on B. E. 1 on B, 2 on B, 4 on B is there. 5. 4 on B is 5. 5 on B, no. 6 on B, no. 7 on B, no. 10 on B, no. That's only epsilon closure of 5. And epsilon closure of 5. Epsilon closure of 5 is, this is epsilon closure of 5. We assign this is
C. And once you know all transactions, then construct transaction table. And transaction table for this is third step. Step 4 with initial state and final state. A. This is A. A means Q0, Q1, Q2, Q4, Q7. Then what is B? B is this one. Q1, Q2, Q3, Q4, Q6, Q7, then Q8. Then C. C means this one. Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7. This is C. And D. D is Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7 and Q9. E. Where is E? E is this one. Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q10. And within the given finite given Epsilon NFA, Q0 is initial state only, Q10 is final state. If Q10 is final state means this E is final state and A is, once we know initial state and final state, then we can construct transaction table. Transaction table for this. Input symbol A and B, total number of states A, B, C, D, then E is final state. E is final state and A is initial state. We check within this. A. State A on A is B, A on B is C. This is A on A is B, C. The next B on A is B, B on B is D. The next C on A, B, C on B, C. D on A, B, E, B, E. Then E on A, B, E on B, C, B, C. And once you know this transaction table, then we can construct DFA for this. Then we can construct DFA for this. First, A is starting state, A to B on input symbol A to B, then A to C. C is non-final state on input symbol B. Next, B to B, A, B to D. Again, D is new state. B to D on B. Next, C. This is C. C to B. C to B on input symbol A. C to B, A. C to C on input symbol B. Next, D. D to B. This is D. D to B on input symbol A. D to E. E is
new state, and that is final. D to E on input symbol B. Then E to, this is E to B. E to B on input symbol A. Then E to C on input symbol B. This is DFA from NFA. This is DFA from NFA, and this question number is 2A. Question number 2A. Question number 2A is 0. Question number 2B. Question number 2B is define alphabets, string. Define alphabets, string, and language. What is alphabets? A word consists of various symbols. That symbol is called as alphabets. What is string? String is a sequence of symbols. That symbols may be alphabets or digits. Each called as string. And what is language? Language is a set of strings. Language is a set of strings. Language is a set of strings, and that string is called as language. Next, construct DFA to accept the string from zeros and 1, starting with at least 2 zeros and ending with at least 2 zeros. Condition is starting and ending. Starting with 2 zeros, ending with 2 zeros. इसमें क्या करना है? फर्स्ट हमको क्या चाहिए? 2 0 चाहिए स्टार्टिंग में. स्टार्टिंग में 2 0. दिस इज फर्स्ट कंडीशन. यहां से हम स्टार्ट किए 1 एंड 2 0. अगर स्टार्टिंग में 2 0 रहे एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड. देन एंड विथ 2 0 में एटलीस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना चाहिए हमारे को? 4. दिस इज 1 1. Q0, Q1, Q2, Q3 and Q4. और 2 0 और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. देन दिस इज 0. लास्ट में 2 1 और मोर देन 1. when this is 1. And from this you can take 1, maybe 2 0 1, then again 0 1 1, or 2 0 2 1, then maybe 0 again 2 1. Means from each state you can take 2 transition. From this 2 transition, or from this 2, from this 2, from this also you can take 2 transition. If you want to take from this 2, यहाँ से हम 0 कंडीशन क्या है? स्टार्टिंग में 2 0 चाहिए. मीन्स यहाँ पे 1 है तो स्ट्रिंग रिजेक्ट होता है. मीन्स यू कैन टेक 1 डेड स्टेट. इफ 1 इज देयर देन मूव दिस साइड. इफ 1 इज देयर देन मूव दिस साइड. दिस इज डेड स्टेट. दिस इज Q5. and from this 0 1, this is called as starting, and this DFA can accept this string starting with 2 zeros and end with 2 1s. After this you can explain 5 tuples. Question number 3. Define regular expression. Regular expression, finite automata, can be represented in the form of mathematical format is called as regular expression. And regular expression, in regular expression you can use 3 type of symbols or operators: plus, star, plus and dot. This is definition of regular expression. Question number 3A, 1 is all. Then question number 2 क्या है? Obtain regular expression to accept the string of A's and B's whose second symbol from right hand is A. मस्त second symbol, first symbol, second symbol क्या चाहिए हमको? A चाहिए. First symbol either A or B. उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं. The any combination of A and B. मस्त A plus B bracket to the power star A and A or B. This is regular expression.
सेकंड क्या है, ऑप्ट एंड रेगुलर एक्सप्रेशन टू एक्सेप्ट द वर्ड विथ 2 और मोर लेटर्स बट बिगिनिंग एंड एंडिंग विथ सेम लेटर वेयर समेशन इक्वल टू। यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमको क्या करना है, जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग जनरेट होगा वो स्ट्रिंग को बिगिनिंग एंड एंडिंग विथ सेम होना चाहिए, 2 और मोर एटलीस्ट दो से ज्यादा रहना। अगर ये यहाँ पे है तो एंड में भी ए रहना, और स्टार्टिंग में बी है तो एंड में भी बी रहना, राइट। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आता है, ए प्लस बी ब्रैकेट टू द पावर स्टार ए, और बी ए प्लस बी ब्रैकेट टू द पावर स्टार बी. This is beginning and ending with same symbol. Next question number. This is beginning and ending with same. Question number 3A4. Question number 3A4 के obtain NFA which accept the string of A's and B's starting with the string AB. Starting with the string AB. Starting में ही क्या चाहिए हमको, AB चाहिए. Then you can take anything. This is NFA. हमको क्या है, स्टार्टिंग में A B चाहिए. This is A, then B. After this, you can take any combination. A comma B. This is Q0, Q1 and Q2. This is NFA to accept this string starting with AB. और क्या है, obtain NFA for the regular expression must obtain epsilon NFA for this regular expression. From this regular expression, we can construct only epsilon NFA. This total question asked for 10 marks. Question number 3A. अब यहाँ पे क्या है, A प्लस B है, तो A प्लस B के लिए फर्स्ट हमको क्या करना है, AB के लिए करना है, देन ये क्या है, A और B. A, this is B. Epsilon, 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 epsilon. This is A. A प्लस B. A प्लस बी के लिए क्या करना है हमको, यहाँ पे इसका एप्सिलॉन, दिस इज इनिशियल स्टेट, देन 2A, A 1A 2A, देन अगेन A प्लस बी, ये और एक बार करना है हमको. दिस इज फाइनल स्टेट, A B, then this is epsilon. Epsilon or epsilon. Numbering you can give 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. This is epsilon and FA from the regular expression. Next, obtain an unambiguous grammar. बस ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, this grammar is ambiguous. Right, unambiguous grammar for the grammar as shown and get derivation for the this string. हमको क्या करना है, derivation पे लिखना है, then unambiguous grammar. Unambiguous grammar क्या है, मैं within this or to replace the variables. हमको क्या है, यहाँ से id plus id star id can generate from this, right. हमको क्या करना, उसको वेरिएबल रिप्लेस करके सेम ग्रामर से और स्ट्रिंग जनरेट नहीं होना, बस टू डिफरेंट ट्री नहीं आना, बस सिंपल यू कैन रिप्लेस विद इन दिस ई प्रोड्यूस ई प्लस टी इज न्यू वेरिएबल, और ई माइनस टी और
T, and T produce T star E or T slash E or E, and E produce opening bracket E closing bracket or I, and I produce A or B or C. This is called as unambiguous grammar, right? और ये क्या करना है हमको, डेरिवेशन करना है. Here you can use any either LMD or RMD. Derive this string. Derivation E produce double line with arrow. E produce हमको क्या चाहिए, फर्स्ट स्टार चाहिए, बस E produce E star E. Then first E replace with opening bracket E closing bracket star E. Then bracket is over. Then we need E plus E. E replace with E plus E star E. Then first E replace with I. Then E star E. Again I replace with A plus E star E. Again second E replace with A I, and this is E. Again I replace with B, A plus B. Next this E as it is. Now this E replace with A plus B star, E replace with E bracket E. At a time replace only one variable, plus B star. Then again next is E minus E, E minus E, A plus B star. This E produce I minus E, A plus B, and I produce A minus E, A plus B star, A minus E replace with I, and at the last A plus B star, A minus B. This is derivation. Question number 5A. Next question number 5A, second question. Consider the following grammar. Grammar is given. From this you write LMD, RMD and parse tree. This 5A is over. Then 5B is LMD, RMD and parse tree for the string. Grammar is given. This is grammar. ऐसे क्या करना है, LMD, RMD and parse tree draw करना है. In LMD, replace variable from left side. LMD, yes is starting symbol, yes produce A B B. हमको क्या जनरेट करना है, 3A, then BAB, 3A. A produce, again A replace with first production, A B B. A as it is, again A replace with A B B as it is. A again A replace with A B B. Then A produce Epsilon, A replace with Epsilon, then B 3A 1B is over. Then next B replace with, we need next symbol A, B replace with AB, A B replace with A B, A B A, again B replace with B, and this B replace with Epsilon.
This is leftmost derivation. And RMD, yes produce A, B, B. A, B as it is. B replace with, यहाँ पे B है, B के बाद क्या है, A, B चाहिए. Means this B replace with A, B. This A as it is. B, A. Again B replace with second position. B, B. Then B replace with epsilon. B replace with epsilon means B, A, B. Then A replace with A, B, A, B. Again A replace with A. Then B, A, B. Next again A replace with A, B, A, B. This A replace with epsilon means 3A, B, A, B. String is generated. Next, parse tree for LMD or RMD. We'll get same. Yes. Yes से क्या आ रहा है? A, B, B. A, B, B. A, B से क्या आ रहा है? A, B और B, B, then epsilon. A, 3 times. A, then again A, then epsilon. This is called as parse tree. Question number 5A. Question number 5A. Next question number 5B. This is PDF examples. This example is there in my YouTube channel. Dear students, this question number 5 is or question number after 3 A's we have solved, 3B we have not solved. This 3B you can check from my YouTube channel. This question already I have solved in my YouTube channel. Pumping lemma also I have solved in my YouTube channel. Then 4B theory, 4A is 5 is 5A is or then 5B is this is design PDF for WWR. Design PDF for WWR and show this ID. This example already is there in my YouTube channel. You can watch from there. Next, design construct CFG for the language. Construct grammar from the language. This example question number 5B you can watch from my videos or you can design PDF for this WWR. WWR means जो भी हमारा W है, W is generated from the A, B. W may be A, B, B. WR is B, B, A. W को stack में डालना है, WR है तो pop करना है. Both are same then insert, both are different then insert, right? और pop कब करना है? ये दोनों सेम रहे तो pop करना है. If both are same, then pop from the stack. Simple example for this PDA. इनिशियली हमारे पास PDA एम्प्टी था. हम इंसर्ट क्या किए? इनपुट सिंबल ये है, स्टैक एम्प्टी है, देन A Z0 और इनपुट सिंबल ये है, स्टैक में ये है, देन 2 और input symbol B, stack is empty, then also insert. Or input symbol B, top element B, then also insert. If both are different, then also insert. Right? When you can pop from the stack, Q1. If both are same, input symbol A, top element A, then pop from the stack, or input symbol B, top element B, then pop from the stack. One transaction or second transaction. Input symbol A, top element A, then pop from the stack, or input symbol B, top element B, then
pop from the stack, and finally move to final state without any input symbol. Epsilon Z0, this is Z0, Q1, Q2, this is Q2. Maybe there is W is empty, then WR also empty. Means here one more transition, Epsilon Z0, Z0. This is PDA to accept the string WR. Next, question number 6. Construct CFG grammar. Here, construct CFG grammar. This question asked for 10 marks. Language 0 to the power 2n m equal to 1. Means n का value if n equal to 1, n equal to 0, then epsilon, there is no zeros. And if n equal to 1, then 2 zeros. If n equal to 2, then 2 into 2, 4 zeros. Right? And m value increase by m equal to 0, then epsilon. If m equal to 1, 1e. m equal to 2, then 2 ones. Right? बस यहाँ से क्या जनरेट कर रहे हैं? Yes produce A, then B. Number of zeros, then number of B's. Number of zero कितने से इंक्रीज हो रहा है? 0, 0, A और epsilon, 2 से इंक्रीज हो रहा है. नंबर ऑफ बीज कितने? 1 से इंक्रीज हो. बी प्रोड्यूस 1 बी और epsilon. This is grammar. Next, this is WWR. Grammar is WWR. Grammar for WWR जो भी आ रहा है उसका रिवर्स चाहिए. बस you can read from WWR. WWR. W, this is A B ना, तो यहाँ पे क्या है? B A. WR is reverse of this. बस grammar for this. Yes produce AS B, AS A, AS A or BS B or epsilon. ASA or BSB or epsilon. This is grammar for WWR. Next क्या है? W is a string. That string generated from 0, 1. At least one's occurrence of 0, 1. At least एक बार क्या आना चाहिए? 1, 0, 1 आना चाहिए. And this one you can take anywhere in a string. Right? Must yes produce A 0, 1, 1, 0, 1, then A. What is A? A can produce 0, A, 1A or epsilon. Any number of A's or any number of zeros, and between these two or before or after, this is one string. At least 1, 0, 1. This is grammar. Second, string A's and B's with equal number of A's and B's. Equal number of A's and B's may be A भी हो सकता है और B A भी हो सकता है, और A B भी हो सकता है, B A भी हो सकता है, in any order. Right? Yes produce AS B or BS B or BSA. AS B or BSA or SS or epsilon. This is grammar for equal number of A's and equal number of B's. Second क्या है? Next question, obtain grammar to generate the string from zeros and ones having substring. Substring क्या चाहिए? 3 zeros. Before this 0, you can take anything. Yes produce A 0, 0, 0 A. What is A? A can produce 0A or 1A or epsilon. Before or after, you can take any combination of 0 and 1. This question number
6 is over. Question number 6b. Question number 6b is simple. Grammar, and define the examples. Grammar, derivation, then LMD, RMD, ambiguous grammar, and parse tree. You can write this grammar. These are the simple derivations. LMD, RMD, and ambiguous grammar and parse tree you can write. Next, convert the following grammar into CNF. हमको क्या करना है? We have to convert this grammar into CNF. We want to convert this grammar into CNF. First, इसके if you want to convert into CNF क्या करना है हमको? First, left recursive करना है, unit production करना है, epsilon production करना है, useless. First, you have to eliminate these things. Then you can convert and CNF and GNF. इसके अंदर क्या है? First, epsilon है. Left recursive है क्या? नहीं है. Then eliminate epsilon. If you want to eliminate epsilon, find nullable variable. Within this, which is nullable variable? A produce epsilon. Using A, is there another variable can produce epsilon? No. Yes. Nullable variable V equal to only A. And once you know nullable variable, then we can write resulting grammar. Resulting grammar means after eliminated epsilon productions. And after eliminated epsilon productions, yes, produce A, and if A produce epsilon means A, already A is there. Then this is B. And A produce A, B, and remove this epsilon. And B produce A, and A produce epsilon means A, then B. This is after eliminated epsilon production. Within this unit production is there? Yes, B produce. Unit production, yes, produce B. If once you know unit production, then eliminate this unit production. Means B, S can produce all production of S and all production of B. After eliminated unit production, yes, produce A, then A or B, and A produce A, B, and B produce A or B. This is after eliminated unit production. Eliminate is over, epsilon is over. Then within this, is there useless production? No. A produce B can terminate. A also can terminate. Then is there any useless? No useless production, no left recursion. Must this grammar you can convert into CNF. अब CNF में नॉन CNF कौन सा है? 1, 2, 3, 4. इसको ही CNF करना है. जो ऑलरेडी CNF है उसको डिस्टर्ब नहीं करना. Yes. Replace A with B0. Means B0 produce A. तो यहाँ पे after substitution will get yes produce. After substitution will get yes produce A as it is. Then B0 A, B0 A, then B. और A से क्या आ रहा है? B0 B and B produce A, B0 A, B, and B0 produce A. This is after replacement this. अगर नॉन CNF क्या है? ओनली एक है. इसमें क्या चेंज कर सकते हैं हम? A B को हम D से रिप्लेस कर सकते हैं. बस रिप्लेस B with new variable D0. Means D0 produce B. After this substitution, yes produce A, B0 A, B0 A, B. All if grammar is CNF, keep as it is. Don't disturb that.
B0 D0, then B produce A B0 A B, B0 produce A, then D0 produce B B. Thus this grammar in CNF. This grammar in CNF. हमको क्या करना था? Convert the following grammar into CNF. This is our resulting grammar or final grammar in CNF. Question number 7A. Question number 7A. 7B क्या है? Eliminate left recursive. Must from the grammar eliminate left recursive. This is given grammar. Eliminate left recursive, and this question asked for 5 marks. This is very simple. If left recursive is there, if yes, then eliminate. How to eliminate left recursive? Our formula: A produce A alpha or beta. Using this, we can eliminate left recursive. How to eliminate left recursive? After eliminate left recursive, A produce beta, A dash is new variable, and A dash produce alpha A dash or epsilon. Using this, we can eliminate left recursive. यहाँ पे देखो, this is left recursive, and this is alpha 1, alpha 2, and this is beta 1, beta 2. Left recursive AA. This is alpha 1, और यहाँ पे क्या है? Beta 1, beta 2, and this is beta 3. यहाँ पे क्या है? B left recursive. This is alpha, this is beta. Using this formula, we can eliminate left recursive. Thus, yes produce beta 1, beta 2. यहाँ पे beta 1 क्या है? A S dash, B S dash, and what is S dash? S dash is new variable. Then alpha 1, alpha 2. Alpha 1 क्या है? A S dash or B S dash or epsilon. First left recursive is over. Within second, A produce beta. Beta means A dash, B A dash or A B A dash. And what is A dash? A dash produce, A dash is new variable. A dash produce alpha A dash. Alpha, इसमें alpha क्या है? B है. B A dash, B A dash or epsilon. The next second last example, B produce beta, means B A dash and B dash, and B dash produce alpha A B dash or epsilon. This is after eliminated left recursive. Next question number 8. This question number 8A. Convert the following grammar into GNF. Dear students, ये एग्जाम्पल ऐसा लगता है कि इसे क्या यहाँ पे ग्रामर क्या है? 8A. 8A क्या दिए इसमें? A produce BC and B produce CA or A and B produce A B or B. राइट. एक्चुअली यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है. यहाँ पे दिस इज C, यहाँ पे C होना चाहिए. राइट. और दिस ये ग्रामर कैसा लगता है हमको? ऑलरेडी हम ऐसा लगता है कि ये ग्रामर क्या है? CNF में है. हम करना क्या है? हमको डायरेक्ट GNF में करना है. यू कैन रिप्लेस ऑल दिस वेरिएबल्स. राइट. लगता ऐसा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या है? सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है. ये B में B के पोर्शन सब्स्टिट्यूट करना, तो यहाँ पे C आता है. C के अंदर आओ, C के पोर्शन सबमिट करना A, तो A यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सिव आता है, तो लेफ्ट रिकर्सिव एलिमिनेट करना. और B में C को सब्स्टिट्यूट करना, C के सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या आता है? A आता है. A को इधर सब्स्टिट्यूट किया तो B आता है. इसका लेफ्ट रिकर्सिव आता है और इसका लेफ्ट रिकर्सिव आता है. 2 बार सब्स्टिट्यूट करना है किसी एक में, तो उसका क्या है? लेफ्ट रिकर्सिव आता है.
Left recursive, first you have to eliminate left recursive. After eliminated left recursive, eliminate epsilon, then you need useless, then convert CNF and GNF. This question already I have solved in my YouTube channel. You can watch from my YouTube channel. Question number 8A. This question answer for 10 marks. Question number 8B is theory questions. Question number 9A is theory questions. You can read this textbooks. Question number 9B and question number 10A. These both are numericals. Both are Turing machine examples. This examples will see. Question number 9B. Question number 9B. Question number 9B. Define Turing machine. Turing machine is a set of 7 tuples. And design Turing machine for the language. इसका क्या करना है हमको? Turing machine करना है. Then one string is given. You have to check the string. Usually you can take one tape. Within this tape you can insert the string. हमको क्या करना है? टेप के अंदर ये स्ट्रिंग को इंसर्ट करना है. स्ट्रिंग क्या है? 0 1 0 0 1 1. Then this is B. टेप B indicates blank. हमको क्या करना है? फर्स्ट पॉइंटर हमारा यहाँ पे रहता है. रीड करना है. रीड करने के बाद आगे जाना है. राइट. यहाँ पे पॉइंटर है. 0 को रीड किए बस इसको x में कन्वर्ट किए. x लेके यहाँ पे देन मूव राइट साइड. और 0 आया. 0 को कुछ नहीं करना और राइट साइड जाना है. y आया. 1 आया. 1 को रीड करना है मीन्स 1 को y करना है. देन अगेन रिवर्स आना है. कहाँ तक? x तक आना है. तो यहाँ पे x आने के बाद और राइट साइड जाना है. यहाँ पे क्या 0 है. 0 को रीड करना देन मूव राइट साइड. y आया. y को y रखना आगे जाना. और एक 1 आया देन इसको रीड करना. रीड करके और x तक आना. यहाँ पे और नेक्स्ट आने के बाद राइट साइड जाना. तो y है. y को डिस्टर्ब नहीं करना. और y है. y को डिस्टर्ब नहीं करना. और यहाँ पे b है. मीन्स दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. एज पर दिस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्यूरिंग मशीन. और ट्यूरिंग मशीन क्या है? फर्स्ट हमारे पास क्या था? दिस इज स्टार्टिंग. यहाँ पे क्या था? 0 था. 0 को हम रीड किए x. देन मूव राइट साइड. देन मूव राइट साइड. तो सेकंड 0 आया. 0 को क्या किया हम? 0 को देखे. 0 को 0 ही रखे. मूव राइट साइड. देन क्या आया? y आया. y आने के बाद क्या किया हम? बस यहाँ पे 1 आया. 1 आया. 1 को रीड किए. y मार्क किए वहाँ पे. देन मूव लेफ्ट साइड. मूव लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड मूव होते समय और क्या है मिला हमको रास्ते में? 0 मिला. 0 है. 0 को हम 0 ही रखे. मूव लेफ्ट साइड. कब तक मूव करना है? नेक्स्ट x तक. x मिला. x को x ही रखना है. मूव राइट साइड. राइट. नेक्स्ट क्या मिलता है? और 0 मिलता है. 0 को रीड किए x. देन मूव राइट साइड. तो उसके बाद क्या मिला हमको? y मिला. y को y ही रखना है. मूव राइट साइड. राइट. देन 1 मिला. 1 को रीड किए. y किए. देन मूव राइट साइड. तो नेक्स्ट यहाँ पे रीड करने के बाद क्या हमको? लेफ्ट आना है. लेफ्ट आते समय क्या मिला? y मिला. y को y रखे. मूव लेफ्ट साइड. देन x है. x को x ही रखे. देन मूव राइट साइड. तो यहाँ पे राइट साइड जाने के लिए हमको क्या चाहिए? 0 चाहिए. यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं है. देन यहाँ पे क्या है हमारे पास? y है. तो हमको क्या मिला? y मिला. y को y रखे. मूव राइट साइड. और एक y मिला. y को y रखे. मूव राइट साइड. तो यहाँ पे y होने का नेक्स्ट क्या है? ब्लैंक आया. ब्लैंक मीन्स ब्लैंक है. हम ब्लैंक को ब्लैंक ही रखे. मूव राइट और लेफ्ट. द मीनिंग इज there is no meaning for this. You can move either left side or right side. String is over. Means this is final state. Q0, Q1, Q2, Q3 and Q4. This is Turing machine for language 0 to the power n, 1 to the power n. Next question number 10.
ए। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या है, सेम यहाँ पे देखो क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। यहाँ पे भी डिफाइन ट्यूरिंग मशीन बोला, क्वेश्चन नंबर 8 में भी ट्यूरिंग मशीन बोला था, डिफाइन ट्यूरिंग मशीन, देन डिजाइन ट्यूरिंग मशीन फॉर द लैंग्वेज, number of ones followed by number of twos followed by number of threes, number of ones equal to number of twos, number of twos equal to number of threes, और number of ones equal to number of threes, मीन्स जो भी इक्वल है, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स करना है। अब 3 वेरिएबल्स करने के लिए क्या करना है, आपको स्टैक लेना है, दिस इज स्टैक। तो हमारे पास क्या है, 1 1 1, then 2 2 2 3 3 3, then this is blank। हमारा पॉइंटर फर्स्ट यहाँ पे है, तो फर्स्ट क्या किया हम, स्टार्टिंग स्टेट 1 था, 1 को रीड किए, देन मूव राइट साइड, 1 था, 1 को रीड किए, मूव राइट साइड, राइट। नेक्स्ट क्या मिला, हमको 1 मिला, तो 1 को क्या चेंज करना है, 1 को चेंज नहीं कर, 1 है, 1 को 1 ही रखना है, मूव राइट साइड। तो हमको क्या है, 2 तक जाना है, और 1 है, 1 को 1 ही रखे, मूव राइट साइड। 2 मिला, तो 2 मिलने के बाद 2 को क्या करना है, हमको रीड करना है। 2 मिला, 2 को रीड किए, मीन्स वाई, मार्क वाई, देन मूव राइट साइड, राइट। नेक्स्ट 2 मिला, इसको रीड किया हम, वाई। नेक्स्ट 2 मिला, 2 को 2 ही रखना है, मूव राइट साइड। नेक्स्ट 2 मिला, 2 को 2 ही रखना है, मूव राइट साइड। जब 3 आता है तो हमको क्या करना है, मूव लेफ्ट साइड होना है। यहाँ पे क्या मिला, 3 मिला, 3 को हम Z रीड किए, देन मूव लेफ्ट साइड। इसको हम Z किए, देन मूव लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आते समय क्या करना है हमको, और रास्ते में क्या मिला, 2 मिला, 2 मिला, 2 को 2 ही रखे, मूव लेफ्ट साइड, राइट। 2 मिला, 2 को 2 ही रखे, लेफ्ट साइड। और नेक्स्ट में क्या मिला, y मिला, तो y मिला, y को y ही रखे, मूव लेफ्ट साइड। और क्या मिला, 1 मिला, 1 मिला, 1 को 1 ही रखे, मूव लेफ्ट साइड। देन यहाँ पे x मिला, x मिला, x को x ही रखे, मूव राइट साइड, राइट। नेक्स्ट 1 है, 1 को रीड किए, x, मूव राइट साइड। 1 आया, 1 को रीड किए, 1 को 1 ही रखे, देन मूव राइट साइड। और y आया, तो y आया, y को y ही रखे, मूव राइट साइड। देन 2 आया, 2 को रीड किए, देन मूव राइट साइड, x हुआ, ये y हुआ। देन और 2 आया, 2 को 2 ही रखे, मूव राइट साइड। देन 2 के बाद क्या है, z आया, z आया, z को z रखे, मूव राइट साइड। देन 3 आया, 3 को हम रीड किए, z किए, देन मूव लेफ्ट साइड। यहाँ पे क्या है, z आया, नो ये 2 है, और z आया, z को z ही रखे, मूव लेफ्ट साइड। 2 आया, 2 को 2 ही रखे, मूव लेफ्ट साइड। y आया, y को y रखे, मूव लेफ्ट साइड। 1 आया, 1 को 1 ही है, मूव लेफ्ट साइड। x आया, x को x रखो, मूव राइट साइड। देन यहाँ पे और 1 है, 1 को हम रीड किए, मूव राइट साइड। नेक्स्ट y है, y को y रखे, मूव राइट साइड। y है, y को y रखे, मूव राइट साइड। देन और यहाँ पे 2 मिला, देन रीड दिस 2, 2 है, 2 को रीड किए y, देन मूव राइट साइड। देन नेक्स्ट 2 फिनिश हुआ, z मिला, z को z ही रखे, मूव राइट साइड। z है, z को z रखे, मूव राइट साइड। z है, z को z रखे, मूव राइट साइड। देन 3 है, 3 को z किए, देन मूव लेफ्ट साइड, मूव लेफ्ट साइड। z है, उसके बाद y मिले, y के बाद क्या है, x है, यहाँ पे x है, x के बाद यहाँ पे है। तो यहाँ पे आने के बाद हमको इधर साइड जाने के लिए हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है, देन मूव। अब वहाँ पे क्या है, हमारे पास y है, y को y रखे, मूव राइट साइड, एक y, और मल्टीपल y है, y को y रखे, मूव राइट साइड। उसके बाद क्या है, z है, z को z ही रखे, मूव राइट साइड, राइट। उसके बाद क्या लास्ट में ब्लैंक आता है, ब्लैंक है, ब्लैंक को ब्लैंक ही रखे, मूव राइट और
left. But this is called as final state. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. This is Turing machine for the language 1 to the power n, 2 to the power n, 3 to the power n. This is solution of second VTU model question papers.